Hey, hi everyone. I guess we are live right now. First of all, thank you for joining this stream, and I hope that all of you are doing good. So, today's session is going to be an AMA session, that is going to be Ask Me Anything session, and we are going to have one of our alumni joining the stream very soon. I'll be talking much about him, who he is, in a while. But before that, if you guys can write it in the chat if I'm really live, I'm not sure. Maybe in the comment, yes or no. If you can see me, if you can hear me properly, just to ensure that there is no technical glitch. Okay. So Jasmeet says that we are live. Okay, cool. So yeah, so let's begin with this stream, and I would like to invite our alumni, whose name is Gladden. He joined us in the August batch, where when we were basically teaching DS Algo, data structures and algorithm course, and he joined for the live batch. And right now, he's still in college. He's from a college in Mumbai called Father Anglian College, and he's going to be graduating in 2022. He's placed with Barclays. He also has offers from TCS Digital and bunch of other companies. I think without any further delay, I should invite Gladden first, and then we'll talk about more about him. Yeah, Gladden, I think you are live as well. Hello. Hello Um, everyone. Just yeah, confirm Gladden. if I'm audible and visible. Yes, you are audible and you are visible as well. So, Okay, yeah, Gladden, great. I was actually briefing our audience about you. It Yeah. would be great, if you can go ahead with your introduction. Yeah, guys. So I'm Gladden. My name is Gladden. I'm from Mhm. Mumbai. Currently a final year computer engineering student, and just done with the whole placement process and stuff. Had an amazing. I was a part of the Coding Spoons DSA batch, July-August batch, and learned a lot in these 2 months. Got placed, and now just enjoying my last semester of college. Okay, Yes. that's great. Yeah. So, yeah, I hope that audience might have got some fair idea about you. So, Gladden, let's start with the first question, and that is going to be around your coding journey, first of all. And we'll come to the placement part and every questions around that thing. So, first of all, how did you started coding? If I talk specifically around data structures and algorithm, was it Right. started in college, or you started it during placements? How it happened, basically? Yeah. So for me, DSA and coding were like very two separate ends because when I started coding in the first year, I was not so much aware that DSA is required extensively for placements and you need to prepare in a certain way. So I was Mhm. approaching more from like whatever subjects we had in college, C. So just did a little bit of programming in C, then C++, then Java. So I was moving that way, but then I didn't have so much idea about how to solve problems, in trees, and how to use algorithms to solve problems, and the DSA problems that we solve on Lead Code or Geeks for Geeks or any other platform. So I was not solving that kind of problems. I was going more from the college perspective, coding that way. So the whole shift happened when I started preparing for placements, and I understood that Mhm. for tests you have to, know Mhm. data structures really well, and there are some Mhm. algorithms that you should know. Mhm. So then I started. Fortunately, I came across a Coding Spoon. I immediately Mhm. joined because that was the duration when I was actually preparing for placements. So I Mhm. thought this is a great way. Like it was a short boot camp, so during my whole Mhm. placement process, I could get Mhm. done with the DSA boot camp also, and then I could give Mhm. interviews as well. Mhm. So it went well. It helped me a lot actually, and yeah, for a Okay, DSA especially. Yeah. that's great. So you mentioned that you started, I think, a bit late, maybe around the placements time, right? So Correct. Yeah. in the college, you had fair idea around, let's say, C, C++, Java, and everything, right? So was it difficult for you, to learn DS Algo in short amount of time? Let's say you studied for, I think, 2, 3 months with us, and Right. you got to know about a lot of things around data structures and algorithm. So is it really difficult to prepare for DS Algo from the perspective of placement, in, let's say, in couple of months? Yeah, so I would say if someone has mastered a language, like if you are very comfortable in any one language and then you Mhm. are starting with DSA, then it is much easier. So if someone is starting DSA but he's facing problems just writing functions and loops and facing Mhm. um,
not so comfortable with the syntax of a language, then it can be difficult for you, because when you're learning DSA, you're coming across a new data structure, then you will implement it, how to solve it. So for me, I think I was a bit comfortable on the language. So my primary language was Java. Uh, I think I was comfortable with Java, at least at what was required. And then slowly, the course was designed in such a way that we were learning each and every data structure one by one, and then solving problems on it. So simultaneously during the classes, we used to solve problems. After class, I used to solve problems on platforms like LeetCode. And then I think that flow went well. So for me, it wasn't so difficult, because I think if you are comfortable in any one language, then you go. And the only part, yeah, again, practice simultaneously as you're proceeding in the course, because otherwise you will be left back. So that helped me, like consistency, I would say. So, like you were already, preparing for placements, right? So placement was already up, and you might be Right, occupied there as well. You had your own college course as well, and apart from right. that, you were learning from Coding Spoon as well. Was it difficult to manage time, like all three of them all together? Yeah, so this period during the placements, those 2 months, so I had to be a little more disciplined than usual, Mhm, but I mhm, had to, because I could see companies coming right in front of my eyes, and this mhm, was the last opportunity. Like if you get mhm, placed in college, which is like after the sixth semester, then it was like, if this is done, if I do well in these 2 months, if I sacrifice a little bit here and mhm, work hard for these 2 months, then I know it will be good the next, like it is going to impact my first mhm, company, like my career, and also the whole fourth year as well. So I was like, mhm, I need to go a little bit, so mhm, cut down on social media, try mhm, to focus a little bit more, and stayed mhm, around, talk to guys who do coding all the mhm, time. So mhm, a little bit that changed, so a little bit mental shift. I mhm, won't say it was very exhausting. I mhm, won't say it was very exhaustive, because we were at home, right? So everyone was at home, didn't take mhm, college so much seriously, uh, and everything else was going simultaneously. So a little bit, I mhm, would say, I was trying to push every day, a mhm, little bit more than usual, but I think it mhm. was totally worth it. It Cool. was totally worth it, Uh, and mhm, yeah, and not so much that one cannot manage, or you have to leave mhm, everything. Maybe a mhm, couple of hours every day, a couple of hours practice every day, mhm, that I mhm. think should do the job. Cool. So, guys, we'll be taking questions from the chat as well. If you have any doubts regarding the interview preparation, regarding data structures, algorithm, or anything related to getting a job or getting a placement, so you can put it in the chat. We'll be taking those questions as well. So, Gladden, I remember that before you joined Coding Spoon, you didn't had any offer, right, from any of the company, even from the MNCs, right? Right, right, And like in college, it's a kind of matter of pride and honor that you get placement, right? You get an offer from any company, right? correct. So how was the period when you were getting rejected from the companies, and at the same time you were preparing for like your coding and every preparation? So how was that period? How did you basically manage to handle those rejections? Right. So for me, it was like initially I got a few Mhm, rejections, and then I got selections like back to back. But the initial period is very difficult, because that is mhm, when you feel, because you see your friends getting placed, you feel there is you are not mhm, doing well, or you didn't study enough. You start basically self doubting yourself, and mhm, the confidence level goes very down, because we are not used to rejections. Someone who's trying placements for mhm, 3 4 months, then that is a different thing. But the first initial 3 4 interviews you give, and if you face in rejections there, then you suddenly start doubting yourself, because that is when you start your placement journey. And especially seeing that other guys are getting placed and you are not, so I think that hurts a little. But then just try to keep myself on track. And mhm, I knew that eventually, because I have not studied so much hard in the past 3 years, so I had to push myself a little bit now, and mhm, it mhm, would be worth it. It should work out, I would hope. And like I couldn't regret not studying hard in the past, right? Because what I had was now, and the next 2 months with mhm, a coding spoon, and whatever I had to do was here. So I thought, even for the mhm, next 2 months also, if I don't get placed, it's mhm. fine. At least after that, I should get placed.
So I can take as many rejections now, but after ending the boot camp, after I feel a little bit confident on solving DSA problems, then I should get placed. So I changed my vision a little bit. So here, one, two, three rejections were fine because I was still preparing. So it was giving me that hope that I am still preparing. I am not ready yet. So rejections are fine for now. And I Got think before ending the boot camp itself, I got like 3 4 offers. So it went well for me. This is amazing. And also, there is a feeling that your dost place ho gaya, right? And you are still Right. unplaced. So it's kind of, I would not say it's हाँ. an embarrassing situation, but it feels kind of insecurity that, you're still not placed and you have to get that offer, right? राइट. ये Cool, cool. ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है ये. दिस Mm-hmm. हैपेंस यूजुअली. क्या होता है ना, यू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, एंड यू आर लाइक you're almost always together, and if you see someone getting Mm-hmm. placed, even if he's a very close friend, Mm-hmm. then you feel, I mean, we both were together, like now he's placed, I am not placed. You feel a Mm-hmm. little bit, so you feel, मतलब एक jealousy वाला हो सकता है किसी के लिए. He feels jealous Mm-hmm. कि मेरा भी हो, और दूसरा खुद के Mm-hmm. लिए भी बुरा लगता है कि यार मेरा नहीं हुआ वो. बट Mm-hmm. इसमें वन वेरी गुड थिंग, आई डोंट नो, किसी ने मुझे बताया नहीं, बट मैंने क्या किया कि आई यूज लाइक जिनके भी प्लेसमेंट हुए थे स्टार्टिंग में ऑल द गुड गाइज मोस्टली गेट प्लेस्ड फर्स्ट, बिकॉज द हाई पेइंग कंपनीज कम इनिशियली एंड दे आर द क्रीम ऑफ द क्लास, सो दे गेट प्लेस्ड फर्स्ट. सो मैं सबको कॉल करता था. Whoever got placed, I used to call them and ask them to share how they prepared and what was the interview process. So मैं literally एक एक पेज पे लिख रहा था. अच्छा, Mm-hmm. सुधीर ने ये बोला है, ये किया, is to write, ये टॉपिक्स उसने प्रिपेयर किया. फिर I called my other friend who got placed. I literally wrote all the topics, and then I saw a similarity between 4 or 5 guys who got placed good. So I saw a similarity in what how they study DSA, क्या क्या पढ़ा उन्होंने, बाकी टॉपिक्स क्या किए थे, and many be like I started following up on that. So I think if your friends are getting placed and you are not, maybe use that for your benefit and talk to them, and they'll be always glad to help you. So वो हेल्प किया. बट ये डाउट आता है, सेल्फ डाउट, और थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है इफ व्हेन योर फ्रेंड्स Mm-hmm. इनिशियली गेट प्लेस्ड एंड यू डोंट गेट. तो वो होता है थोड़ा. Got it, got it. My next question to you is around the type of course we follow, because since Coding Spoon is mostly into live courses, while we might, and we might provide recorded courses as well, but when you joined us, we were mostly into live classes, right? So राइट. live class ka experience and recorded courses ka experience. So the question is very simple. Like, although there were a bunch of other courses in the market, some could राइट. be around recording as well, recorded courses. So why did you chose to come live, although you had the flexibility of watching the recorded lectures anytime? राइट. सो द थिंग इज, रिकॉर्डेड कोर्सेज तो हमेशा से है ही. वो तो फर्स्ट ईयर में भी Mm-hmm. थे, बट आई डिडंट डू एनीथिंग. वो तो हमेशा से थे. इवन सम पॉपुलर वंस आर आल्सो देयर. बट द थिंग इज, यू डोंट हैव टू, वो नीड नहीं होती कि करना ही है अभी, क्योंकि अभी नहीं किया तो कल भी तो मैं वो वीडियो देख सकता हूँ, परसों भी वो वीडियो देख सकता हूँ. तो नो वन इज देयर टू पुश यू, एंड वी ह्यूमंस आर डिजाइंड इन अ वे कि हम हमेशा सब पोस्टपोन कर देते हैं. आराम से कल हो सकता है वो, तो मैं आज क्यों करूँ उसको. लेकिन लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं है. तो इफ यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन द कंडीशन दैट यू आर ऑब्लाइज्ड टू कंप्लीट समथिंग टुडे इटसेल्फ, आज हो ही जाना चाहिए वो, तो रोज का 2 आवर्स वो होना ही है. यू कांट पोस्टपोन. तो उससे दो चीजें होता है. एक तो यू अटेंड द लेक्चर ऑल्सो, और फिर उससे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होती है जो चाहिए डीएससी के लिए. अगर एवरीडे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो एक आपका कंसिस्टेंसी और मोमेंटम भी बनता है कि रोज आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, रोज रोज एवरीडे. सो ब्रेक भी नहीं आता बीच में. जो रिकॉर्डेड कोर्सेज में हम कभी कभी लेज लेज अराउंड करते हैं. सो आई फील वो मेरे लिए हेल्प किया, और मैंने ज्वाइन भी इसीलिए किया था कि एटलीस्ट कोर्स तो कंप्लीट कर दूंगा. 2 मंथ्स ज्वाइन करके सारे लेक्चर्स तो अटेंड कर ही लूंगा. दैट हेल्प. Cool, fair enough. So we'll take couple of questions from the chat. So Ishan asked how interview process went. Gladden, I think he's asking specifically for Barclays. How was the Okay, हाँ. interview process at I'll give Barclays? a general scenario also, and then Barclays also. So, general scenario for the other companies also that I got placed, it was more like first a coding test. Usually, sometimes there are aptitude questions as well along with a coding test. Once you clear that, then we usually have 2 or 3 interviews. तो एक टेक्निकल इंटरव्यू तो होता ही है, जिसमें यू आर आइदर गिवन डीएसए प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा अदर कॉन्सेप्चुअल लाइक डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस,
एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह, कपल ऑफ वो एक्स्ट्रा होता है. बट एक क्वेश्चन होता है यूजुअली कोडिंग क्वेश्चन जो डीएसए का पूछते हैं, 1 or 2 क्वेश्चंस. तो दिस वाज फॉर मोस्ट इंटरव्यूज, एंड देन उसके बाद फिर एक फाइनल एचआर इंटरव्यू होता है. For Barclays, luckily there was only one test and one interview जिसमें they covered everything. So one test में सारे MCQs थे, उसमें all subject सब कुछ था, OS, DBMS, JavaScript, Java, and like all language based questions भी थे, DSA questions भी थे, 2 DSA coding questions थे. So I had one question was for 50 marks and the other one was 20 marks. So the 51 marks one I completed it entirely. And MCQs मैंने सारे कर लिए थे अच्छे से. तो फिर मैंने skip कर दिया 20 वाला because MCQs को भी अच्छा खासा weightage था. तो that then I cleared the round, and then after that there was a single interview जिसमें they tested your coding skills and your HR, वो सब एक ही में हो गया था. So उसमें भी he asked me more about my projects, how I made them, what challenges I faced, some questions particular to my projects, a little bit around like conceptual questions, and then a little bit DSA, but not too much in this case. For Barclays में मेरे को interview में बहुत ज़्यादा DSA नहीं पूछा. And then it was more on the service values और उनके जितने भी principles होते हैं company के, how you will adhere to it and what have you done in college that they think is valuable to them, वो था. Okay. Overall, if I say, then DSA is very important, even in the interviews and test. And उसके अलावा जो आपके DBMS, OS, SQL and computer networks वगैरह के जो concepts होते हैं, if you know that well, and even language like Java पे भी मेरे को questions पूछ रहे थे कुछ कुछ इसमें, तो वो भी आपको आना चाहिए. Any one language you should have command on, and your projects you should know well. That also they ask extensively in interviews. Whatever project you have mentioned on your resume, they ask you to explain your project, what technologies you used, why that particular tech stack, and all that questions. Okay, so in conclusion, if I have to say that you need to know DSLGO, you need to have a command over at least one language. It could be Java, C, C++, Right. and you should be very aware of your projects, right? Correct. Yeah. So you made projects around like what technologies? Was it very specific around something that you were passionate about or you learned in college? Or was it like you just made it for, like there are people who just make projects to showcase in interview that, hey, I'm passionate about machine learning or AI something, right? Right. So I'm not the development guy. So I know Mhm. some guys who do extensive development and create a lot of projects. I didn't do so much of development. Only the college projects that we create during third year. So that project I had explained for most interviews. So I knew what we did in the project, and उसका मुझे पता था. Even if you have most people, I don't know, everyone has their own way. Some guys will pick projects from here and there. Whatever is the case, just remember that before going for the interview, if you have mentioned it on the resume, then you should at least know what is your project, and if the interviewer asks you any questions on your project, you should be able to answer. उतना अगर है तो sufficient है. बस understand what is your project, even if you have not done it by yourself, because most guys don't do, then they face problems later. So you should know your project and you should be able to answer the questions on that. बाकी मैंने अलग से बहुत development नहीं की थी. College के projects only I mentioned in the resume, which you have to do. So yeah. Okay. So मतलब the question was कि ठीक है मतलब I agreed कि you should be हाँ aware. हाँ, I कि so sorry, हाँ I missed the हाँ point. हाँ, so there is no specific हम्म, technology or something. तो my project was based on machine learning. मैंने machine learning हम्म, का किया था. कॉलेज में हम्म, बहुत क्रेज होता है. थर्ड ईयर में आई डोंट नो, एवरीवन इज डूइंग मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट. तो मैंने भी कर लिया था, एंड वही मैंने, बट ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है. मतलब आई हैव सीन गाइज डूइंग एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स भी, वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी, एंड डिफरेंट टेक स्टैक हम्म, वगैरह, कोई रिएक्ट वगैरह में करता है, तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, all that is fine. Like they don't target a specific tech stack or हम्म. something. I have never seen ऐसा कुछ interviews में. So project simple भी है तो it's fine. You just have to be bothered about कि एकदम heavy technologies use करनी है या ऐसा कुछ कोई constraint नहीं होता है मतलब थोड़ा हाँ, I बहुत है don't कि think there is constraint for projects regarding to technologies. Like ऐसा तो for most companies ऐसा नहीं होता. हम्म. Got it, cool. So the next question is from Akshita. What type of questions
you practiced of DSA and how many questions you did for each topic? Okay. So I would say during the coding spoon boot camp, uh, during this 2 months, I think I roughly did at least 100 to 150 questions, I guess, somewhere between 100 to 150 questions. And for each, I don't exactly remember, but then again, it was, I think for every data structure, at least 20 questions, around 20, 10 to 20 questions, 20 or more maybe. And then for some concepts, it is not about data structure, like recursion कर रहे हो तो वो हर किसी में यूज होगा, वो भी concepts आनी चाहिए. देन ट्रीज वगैरह के बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, ग्राफ्स मैंने Mhm. स्किप किया था, तो इट वाज नॉट बैलेंस की ऐसा पर्टिकुलर. But I started with the flow that we had for the boot camp. So started with arrays and then strings, then how we Mhm. were moving stacks, queues, linked list, trees, graphs probably समझ लिया लेकिन Mhm. practice नहीं किया honestly. Mhm. But Mhm. बाकी के I think 10 to 20 questions I think for each data structure कर लिए थे. And every question में I was trying to do more than one approach. So even we used to discuss this in classes as well, right? So I Mhm. used to try to solve one problem with different approaches. क्योंकि in interviews also sometimes they ask you that this is not the most optimized solution, so tell a better solution. So tried मतलब एक क्वेश्चन भी है तो वो कभी कभी you could solve it in different ways. And if Mhm. you are able to get a question, मतलब अगर solve कर पा रहे हो multiple ways में, तो आपका Mhm. logic building बहुत improve होता है. तो अगर मुझे क्वेश्चन आया इंटरव्यू में और वो Mhm. वैसा क्वेश्चन मैंने नहीं किया है बट मैंने सिमिलर Mhm. बहुत प्रैक्टिस किया है, तो मुझे Mhm. कॉन्फिडेंस होता है कि ट्रीज का प्रॉब्लम जो है ट्रीज के मैंने किए हैं, तो आई विल बी Mhm. एबल टू डू दिस एंड देन समहाउ यू फिगर आउट द लॉजिक एंड गेट इट डन इवन इफ Mhm. यू हैव नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम इनिशियली. तो प्रैक्टिस तो है ही. आई मीन मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू Mhm. गेट. सो डीएसए का तो यही है. ओके. सो आपके बार्कलेज में मतलब इतना कोडिंग का होगा, मतलब काफ़ी बेसिक लेवल पे कोडिंग पूछा होगा या डीएस एल्गो हम्म. ही पूछा होगा. बट हम्म. देयर कुड बी अदर कंपनीज जहाँ पे डीएस से स्पेसिफिक राउंड्स हुए होंगे. सो वहाँ पे हम्म. सिर्फ मतलब आपके लॉजिक बिल्डिंग और इंट्यूशन लेवल पे था फोकस, और या फिर आपके कोड करने पे भी था कि मतलब यू शुड राइट एग्जैक्ट कोड जैसे सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह. हम्म. सो फॉर वन कंपनी आई रिक्वायर जहाँ पे मतलब कोड करने हम्म. बोला था, तो ही हम्म. had told me to solve the problem, हम्म. to code the problem. हम्म. And he said whatever language you are comfortable do it. So he didn't हम्म. say कि C++ या Java. So he said, हम्म. I asked him if I could code in Java. He said okay. हम्म. I coded it और output दिखा दिया. तो I हम्म. think he told me to optimize it and then हम्म. वो कर दिया. तो yeah it was. तो हम्म. I think this is not a problem कि हम्म. language वाला जो issue हम्म. बहुत students are confused. Even I was very much confused about what हम्म. language to pick. So if हम्म. you are already confident in one language, mostly हम्म. students prefer C++, Java. So हम्म. if you can do any one of those, and then हम्म. just try to get better at that, at solving more number of हम्म. problems and logic building improve करो. Got it. So Got it. Cool. I'll take some more question from the chat. Do we need to yeah. know any such technologies to get an offer? I think you have already answered this thing. Hmm. Let me move on to a next question, which is aligned with the previous question that Akshita had asked. कि डीएसए के लिए कितने क्वेश्चंस एंड यू नो कितने कौन से टॉपिक पे आपने वर्क किया. सो द क्वेश्चन इज कि क्या स्ट्रैटेजीज या क्या फ्रेमवर्क आपने फॉलो किया सो दैट यू आर एबल टू पिक अप थिंग्स रियल क्विक. 2 महीने Right. 3 महीने में डीएसए सीखना मतलब इट्स अ ग्रेट थिंग आई वुड से, क्योंकि लोग यार 3 3 4 4 साल निकाल देते हैं मतलब कॉलेज में कोड करना सीपी करना एंड ऑल. सो 2 3 महीने के शॉर्ट टर्म टाइम में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना इंटरव्यू के लिए. तो क्या फ्रेमवर्क काम आया? क्या Right. रैंडमली क्वेश्चंस उठा के आपने स्टार्ट कर दिया, कोई टॉपिक रैंडमली उठा लिया, कभी स्टैक कभी ये, तो कुछ ऐसा कुछ था क्या स्ट्रक्चरिंग वगैरह, या कोर्स में आपको ऐसा लगा कि कोर्स बहुत स्ट्रक्चर था इन अ वे कि इट वाज हम्म. एबल टू फीड यू विद द राइट कंटेंट इन अ राइट मैनर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि डीएससी मैंने हुँ, पूरा कवर कर लिया. इट इज़ वेरी हुँ, एक्सटेंसिव एंड हुँ, हुँ, कितने भी आप प्रॉब्लम्स कर लो तो भी हुँ, इट इज़ नॉट इनफ. लाइक यू ऑलवेज नीड टू प्रैक्टिस मोर, बट वट हुँ, एवर प्रिपरेशन आई डिड, आई थिंक इट हुँ, वॉज सफिशिएंट फॉर माई प्लेसमेंट्स. हुँ, लाइक हुँ, तो उससे हो गया मेरा काम. एंड हाउ हाउ आई डिड इट, सो आई थिंक या द हुँ, स्ट्रक्चर्ड पार्ट आई थिंक इट वर्कड वेल, बिकॉज उससे पहले जब मैं प्रिपेयर कर रहा था आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व हुँ, प्रॉब्लम्स.
तो फिर मैं ऐसा करता था कि अच्छा ये कंपनी लिंक लिस्ट की क्वेश्चन पूछी थी क्या, सो ऐसे इसके अराउंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं लिंक लिस्ट की। इसने ट्रीज का क्वेश्चन पूछा था कोई, तो जिसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलो ट्रीज का में भी प्रैक्टिस करते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट वे विल वर्क, क्योंकि उसमें हर एक डेटा स्ट्रक्चर मतलब यू इफ यू मूव इन अ फ्लो ना, तो जैसे हम कोर्स में कर रहे थे कि एरेस किए तो पहले एरेस अच्छे से हमने किया, जब रिकर्जन सीख रहे थे तो फिर रिकर्जन अच्छे से सीखा, वी सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स ऑन दैट। फिर जब स्टैक क्यूज पे गए तो सीखा, फिर उसके बाद एक एक लाइक लिंक लिस्ट किया। सो आई थिंक दैट होल, बिकॉज व्हेन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वन डेटा स्ट्रक्चर ना, तो आपके दिमाग में फिर बाकी सब नहीं चलता, देन यू आर ओनली कंसर्न विद दैट डेटा स्ट्रक्चर। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने भी इजी हो जाते हैं उस पॉइंट के लिए, देन यू आर, तो फिर धीरे धीरे आप मूव करते हो, यू आर ओनली राइट नाउ फोकसिंग ऑन वन डेटा स्ट्रक्चर। पर रैंडमली इफ यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ नोवेयर, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूज में, जो क्वेश्चन मिला उठा के उसको प्रैक्टिस करने का ट्राई किया, तो वो आई थिंक स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, एंड यू योरसेल्फ डोंट नो कि आपको कितने डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं अच्छे से। रैंडमली अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन हो गए कुछ नहीं हुए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आता है या नहीं आता। एक एक डेटा स्ट्रक्चर पे आप क्वेश्चन करोगे, देन यू फील ओके आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन दिस। तो क्वेश्चन में आप पिक भी करना हो ना, कभी टेस्ट में अगर दो तीन क्वेश्चन आए, एक एरेस मतलब एक ट्रीज का है एक लिंक लिस्ट का है, तो अगर आपने लिंक लिस्ट अच्छे से किया है तो आप पहले उस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, तो वो चीजें हेल्प करती हैं, यू नो योर सेल्फ बेटर व्हेन यू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। तो वो हेल्प किया कोर्स में। So basically, just give me a moment. ओके। श्योर। सो ग्लैडन, मान लो यार आपने थर्ड थर्ड फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया, फोर्थ ईयर के बिगनिंग में कोडिंग। अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में होते तो आप कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते जो आप फोर्थ ईयर में आने के बाद किए? काश आपको वापस से फर्स्ट सेकेंड ईयर में पता चल जाता कि यार ये चीज़ करनी है, तो ऐसी कौन सी एक दो चीज़ आप करते हैं, मतलब पॉसिबली बाकी लोगों को हेल्प कर पाए जो अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो? राइट। तो पहले तो ये है कि मतलब फर्स्ट ईयर तो ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर पे कमेंट नहीं करूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर से चालू करनी चाहिए, लेट्स सी फ्रॉम सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ इज इनफ टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग। तो एक चीज तो ये है कि मैंने कभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई की ही नहीं, तो आई नेवर डिड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मैंडेटरी है, करनी चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत डिबेट्स होते हैं कि वेदर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी फॉर प्लेसमेंट्स और नॉट। बट आई वुड से एक बार ट्राई करना चाहिए, मतलब मुझे ट्राई करना चाहिए था, या फिर मे बी मैं इन फ्यूचर करूंगा, अभी तक तो नहीं किया। तो इफ यू टेक मी बैक टू फर्स्ट ईयर, तो कभी तो सेकेंड या थर्ड ईयर में एक सेमेस्टर में भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आई वुड ट्राई, एक सेमेस्टर में भी आई ट्राई टू डू मोर ऑफ डेवलपमेंट। तो क्योंकि प्लेसमेंट पास आ जाता है तो फिर आप डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, आप डीएसए वगैरह इसी में, तो थोड़ा क्योंकि डेवलपमेंट से फिर आपका थोड़ा रेज्यूमे एनहांस हो जाता है, तो आई वुड से उस पर थोड़े ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आपको आते होंगे वो। एंड इसके अलावा प्लेसमेंट्स के होल अलावा लाइक जस्ट फॉर दी कॉलेज लाइफ पार्ट, आई वुड से स्टूडेंट शुड जॉइन अदर सोसाइटीज एंड ट्राई टू एक्सप्लोर मोर कॉलेज में फर्स्ट ईयर से, जो मैंने किया। सो आई फील गुड अबाउट दैट कि मैंने एटलीस्ट एक्सप्लोर वाला पार्ट तो अच्छे से किया। आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन मतलब कॉलेज फेस्ट्स हो गए या काउंसिल्स में भी आई वाज इन्वॉल्व्ड इन दी सेकेंड ईयर, इवन नाउ आई एम इन्वॉल्व्ड। तो वो चीज़ें हेल्प करती है आपकी लाइक टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, हाउ यू डील विद पीपल, हाउ यू वर्क इन अ टीम एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक वो चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, एंड ये चीज़ें भी मैटर करती है, लाइक डिसेंट पॉइंटर हो अगर स्टार्टिंग से, तो फिर लास्ट में प्रेशर नहीं आता, क्योंकि कंपनीज का एक स्पेसिफिक सीजीपीए होता है कट ऑफ, जो कि अभी तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स नहीं होगी क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम सबको 10 पॉइंटर आ रहे हैं, लेकिन जनरली अगर इन नॉर्मल केस इट्स गुड टू हैव अ डिसेंट सीजीपीए। और इसका भी ये नहीं कहूंगा मैं कि 10 पॉइंटर वाली की अच्छी प्लेसमेंट होती है और 8 की नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो एक इनिशियल इंप्रेशन होता है, तो मेंटेन करके रखो, खराब मत रखो पॉइंटर अपना बस। गॉट इट। सो बेसिकली एक वो होता है ना कि उनका एक स्पेसिफिक मिनिमम बार है, हाँ, उसके बाद आप मिनिमम हो बार तो के यू आर ऊपर नहीं। सेफ। राइट। गॉट इट, गॉट इट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसे एक दो टॉपिक जिनको आप रेकमेंड करो आपके जूनियर्स या जो ये स्ट्रीम को वॉच कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आपको कोडिंग सीखनी है, तो राइट। ऐसे कौन से टॉपिक आपको लगते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ कवर करते हैं कोडिंग के और जिसको आई वुड छोड़ना से नहीं चाहिए? आई वुड से रिकर्जन के बारे में कोई इतना बात नहीं करता है, एटलीस्ट इनिशियली मैंने इतना सुना नहीं था बिफोर ज्वाइनिंग द ये, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इतना इंपॉर्टेंट होता है वो,
बट आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड रिकर्जन एंड मूव ऑन विद अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, तो आगे जाके फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक इन ट्रीज एंड स्टफ, इवन इन डीपी, फिर बहुत बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। रिकर्जन जितना अच्छे से कर सकते हो ना स्टार्टिंग में, इवन आफ्टर डूइंग अ लिटिल बिट आई थॉट कि अभी भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सो रिकर्जन जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करो, तो बाद में चीजें आई थिंक आसान हो जाती है। सो रिकर्जन इज वन थिंग, बाकी टॉपिक्स तो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं, तो आई वुड से रिकर्जन हेल्प्स अ लॉट, वो करो, क्योंकि नो वन डिस्कस बात नहीं करता उसके बारे में। हम लोग ऐसे प्रोसीड करते हैं, एरेज, फिर स्ट्रिंग्स, फिर ये स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। लेकिन रिकर्जन की प्रैक्टिस मेरे को लगता है अलग से करनी चाहिए, जिन प्रॉब्लम्स में रिकर्जन यूज होता है उनके, और काफी प्रॉब्लम्स में एक रिकर्जन वाला अप्रोच होता है और एक नॉर्मल अप्रोच होता है, तो वो दोनों भी आपको लॉजिक बिल्डिंग में आनी चाहिए। इन सम केसेस यू रिक्वायर द अदर सॉल्यूशन फॉर मोर ऑप्टिमाइज, तो that I would Cool, say. got it. Got it. So, Gladden, you mentioned that while technical skills are really important, at the same time there has to be focus on soft skills as well, right? And Right. since Yeah. you were part of multiple communities and organizations in your college, you had, I think, fair idea or decent idea कि ये सब skill set कितना important है, right? So somebody who is in Right. college and they might not be interested in in joining this kind of communities, but they still want to have decent skill set in soft skills. So उनके लिए क्या मतलब approach होना चाहिए? How they can acquire this soft skill? Because I have seen specifically there are companies who focus on more on qualities and leadership skills rather than technical Right. skills तो होने ही चाहिए, बाद में वो भी होना चाहिए आपके पास, correct? Right. Right. इसके लिए तो आई वुड से फॉर दिस, स्पेशली इन कॉलेजेस में ये भी बहुत होता है कि पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इंग्लिश, लाइक इंग्लिश में कोई बात नहीं करते यूजुअली, तो इंटरव्यूज वगैरह में यू डोंट फील कॉन्फिडेंट बिकॉज सामने वाला आपको क्वेश्चंस पूछते जा रहा है और आपको इंग्लिश में रिप्लाई करना है। स्टूडेंट्स को इतना आदत नहीं होती इंग्लिश में बात करने की, सो वो आई थिंक यू यू शुड स्टार्ट टॉकिंग मोर इन इंग्लिश, किसी के साथ भी करो। अभी तो प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी बना दिए कि मॉक इंटरव्यूज भी, मतलब आप इंटरव्यू टाइप भी उस पे कर सकते हो, इन वट एवर वे यू वांट टू डू। आई थिंक बी मोर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश एंड स्पीकिंग इन जनरल। तो स्ट्रेंजर से बात करने में इफ यू आर कंफर्टेबल, या फिर किसी मतलब समवन हु गेट्स नर्वस ड्यूरिंग इंटरव्यूज ना, वो ऐसे भी बात करने में नर्वस हो जाएगा थोड़ा बहुत, उसको अगर स्टेज पे बोलो आप की बात कर लो तो वो नर्वस वैसे भी हो जाएगा। तो वो एक जनरल होता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एज अ पर्सन, एंड आप एक ग्रुप में कितने अच्छे से बात कर सकते हो या एक टीम में कितने अच्छे से बात कर सकते हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, वट एवर यू आर थिंकिंग, हाउ मच एफिशिएंटली आर यू एबल टू कन्विंस दैट टू द अदर पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू। ये चीज अगर आपने मास्टर कर ली ना, वट एवर यू आर थिंकिंग एंड वट एवर जो भी लिसनर है उसको आप कितनी अच्छी तरीके से समझा पा रहे हो, तो जब आप प्रॉब्लम्स भी एक्सप्लेन करते हो तो सामने वाले को अच्छे से समझता है। सो ऑल दिस थिंग्स आई थिंक ये एक्सप्लोर करके ही आएगा थोड़ा बहुत। चीजें मतलब वो इनिशिएटिव आई थिंक इंटेंशनल होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो मतलब खुद से डिसाइड करना चाहिए कि आई वांट टू गेट बेटर एट दिस, देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग बी, एंड उससे फिर हो जाएगा। तो सॉफ्ट स्किल्स तो वैसे ही डेवलप करनी पड़ती है धीरे धीरे, ये ओवरनाइट नहीं होगा। सॉफ्ट स्किल्स यू कांट डू इन लाइक 2 weeks 3 weeks, इट टेक्स टाइम। Cool, got it. Cool. I think we have taken good number of questions, and we don't have any other questions in the chat as well. But before we wind up this particular stream, एक या दो कुछ advice आप देना चाहो हमारे audience को, assuming कि they might be in college or they are preparing for the interviews and trying to get into good companies. राइट राइट, तो प्लेसमेंट्स के स्पेसिफिक वन एडवाइस इज कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या पहले से आपने कितनी भी कर रखी है, वन वन स्ट्रेंथ दैट यू माइट हैव इज कंसिस्टेंसी, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, मतलब जिनको बहुत अच्छे से आता भी हो या वो प्रिपेयर कर भी रहे हैं अच्छे से, लेकिन उनका फिर भी नहीं हो रहा है, और किसी का हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना, मतलब इट इज, जो भी चीजें डिफिकल्ट होती है ना वही यूजुअली मतलब दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज ज्यादातर लोग वही नहीं कर पाते, सो आपको वही करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और 2-3 months कोई अगर कंसिस्टेंटली कोड करेगा ना, देन यू योरसेल्फ विल फील कि जो मोमेंटम बनता है डीए से, अगर कोई 2-3 months से रेगुलरली एवरी डे 2 to 3 प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपका जो लेवल का कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बिल्ड होता है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। सो इन जनरल कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो
Mhm. कंसिस्टेंटली करो। ऐसा नहीं कि अभी कंपनी आ रही है तो ये हफ्ता किया, फिर अभी बीच में छोड़ Mhm. दिया, फिर जब नेक्स्ट कंपनी आई तब फिर वापस करना छोड़। डोंट डू Mhm. दैट। वो एक मोमेंटम बनता ही है। एवरीवन Mhm. आई हैव टॉक टू हैज एक्सपीरियंस, जब आप Mhm. कोड कर रहे हो तो वो एक बनता है, जस्ट डोंट ब्रेक दैट होल Mhm. स्ट्रीक। एंड वो बहुत हेल्प करता है ड्यूरिंग डीएसए। इसके अलावा बाकी जो छोटी मोटी Mhm. चीज़ें होती है ना, वो मिस मत कर देना कि Mhm. आपका डीएसए Mhm. बहुत अच्छे से हो गया है, Mhm. लेकिन फिर Mhm. आपने रेज्यूमे अच्छे से नहीं बनाया, Mhm. लाइक स्मॉल स्मॉल Mhm. थिंग। रेज्यूमे अच्छे से नहीं बनाया, उसका इंप्रेशन कुछ हो गया, या फिर आप Mhm. एप्टीट्यूड का आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, डीएसए पूरा आपने Mhm. कर दिया और एप्टीट्यूड Mhm. करना ही भूल गए, तो वैसा मत करो। Mhm. प्रोजेक्ट्स अगर किया है तो वो एक्सप्लेन कर पाओ आप सामने वाले को। Mhm. सो मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीएसए देन डोंट मिस आउट ऑन द स्मॉल स्मॉल अदर थिंग्स, क्योंकि वो फिर आपके ब्राउनी पॉइंट्स चले जाते हैं वहाँ पे। प्लेसमेंट्स Okay. के रिगार्डिंग तो ये, और बाकी डोंट लूज होप। आई वुड से Okay. डोंट लूज होप। बहुत लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं कि एक दो Mhm. रिजेक्शन होने के बाद अब तो हो ही नहीं Mhm. सकता, या अब Mhm. उनको खुद पे वो हो जाता है कि आई एम जस्ट नॉट गुड इनफ Mhm. फॉर दिस। जो हो रहा है उनमें कुछ अलग होगा, दे हैव बहुत मेहनत Mhm. करी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादातर लोग जो प्लेस होते हैं ना, मतलब रिजेक्शंस के बाद, Mhm. वो बस हो जाते हैं क्योंकि दे आर स्टिल, Mhm. जो स्टार्टिंग में ड्यूरिंग रिजेक्शंस वो Mhm. भी मेहनत कर रहे होते हैं, और उसके बाद Mhm. भी वो करते रहते हैं इवेंचुअली, एंड इट गेट्स ईजियर फॉर कॉलेज प्लेसमेंट्स। जितने लोग देख रहे हैं, फॉर Mhm. कॉलेज प्लेसमेंट्स वैसे ही होता है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है। द क्रीम Mhm. गेट्स प्लेस्ड फर्स्ट, धीरे धीरे फिर आपकी भी टर्न आएगी और हो जाती है। डोंट लूज होप इसमें, कॉन्फिडेंट रहो, हो जाएगा। प्लेसमेंट्स Got का it. तो कोई टेंशन नहीं, हो जाता है सबका और हो जाएगा। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट। Cool. I think we have come to the end of this interview, and I really hope that this was an insightful session for everyone who is watching this stream. And you guys have taken a lot of takeaways from this particular stream. And if there is any question that we might have not answered in the stream, or if you're watching it after the live stream, you can reach out to us on our social media handles. You can also connect with Gladden. We'll put up his social media links as well in the description. Apart from that, if you have any queries regarding our upcoming batches of data structures or any other course, you can check out the description. There is a link there. You can put your queries there, and we would be reaching out to you for any concern. So yeah, with this we have come to the end. Thank you, Gladden, for joining this stream, and thank you everyone who is watching this stream. Thank you once again. Thank you guys. Bye Thank you bye. so much, sir, for this. It was my pleasure to share my experience, and thank you so much once again. Yeah. Sure, sure. Thanks, Gladden. Yep. Bye, guys.